Okay, guys, welcome back to the next stage. जो यहाँ पर green आ रहा था वो इस वजह से आया था क्योंकि the reason I'm using a recording software जो कि GPU supported है. तो once I start the rendering thing, it just goes green और फिर वो bug आना शुरू हो जाता है. Okay, so bear with me. Once we start the rendering part, just ignore this thing. Okay, I can also close it. If I could. Okay. Anyway, so पहले हमने देख लिया था कि कुछ टेक्सचर्स की कुछ मटेरियल्स की टाइप है और क्या क्या आप कर सकते हैं. नाउ वी नीड टू सी के लाइट्स किस तरह की हैं और हाउ टू क्रिएट लाइट्स और बैकग्राउंड किस तरह चेंज हो सकता है. ओके, सो आई एम जस्ट गोइंग टू यूज द सेम थिंग. मे बी आई विल चेंज इट अलॉन्ग द वे. Let's just create a separate one. Let's just try. Let's just create a separate one just so you guys एक बार repeat करने से you guys will understand कि किस तरह से you can create scenes like that. Okay, so let's create a cube again. Okay, Shift V, save frames on, camera, selection, super tele, zoom out. Okay. Okay, for now let's just keep it. You know what? इसको और भी बेहतर किया जा सकता है. Yeah, for now let's just keep it like this. Okay, we will be using a HD composition. HD means 19:20 composition. Okay, so let's hit render. So as you can see, जैसे I hit render, you can see कि flat lighting है और कोई lighting नहीं है actually. It is just showing the polygon or polygon surface and the background as white. Okay, so let's see this. Okay, if I put the HDRI environment, if I click on it, you can see कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है because in the background there is nothing to see. So once I put the HDRI, अच्छा HDRI, whenever you try to add HDRI, don't do this कि आप यहाँ फोल्डर पे क्लिक करें. ठीक है, आप इस ब्लैक स्क्रीन पे पहले क्लिक करें एंड देन इस फोल्डर पे क्लिक करें. ठीक है, इससे पहले करेंगे तो वो सपोर्ट सही नहीं करता. Okay, so let's do that. ठीक है, अब now as you can see sometimes you will need the HDRI in background, but I don't really want to see the HDRI in the background. Okay, so what you can do is you can just go here. You can just go here in the settings. और यहाँ पर you can just go a bit down और you pick कर लें alpha channel. इससे होगा ये कि ये जो background है ये कट जाएगा. So you can see the alpha channel. But right now we don't want to see the alpha channel. We want to see some colors but not the background. Okay, मतलब ये background नहीं देख रहा है, हमें अपना color कोई भी pick करके we can use that. ठीक है, so how can we do that? So उसके लिए क्या करना होगा, एक और Octane sky create करना होगा. Let's just call it light. ठीक है, और फिर मैं एक और HDRI environment create करूँगा. So you can see ये mix नहीं होते ये. ठीक है, so you will need to create another one. So इसको मैं कह देता हूँ background. But अभी इसने क्योंकि ये overlap कर गया और यहाँ पर सब कुछ black show हो रहा है, तो what you can do is you can just click on this button और यहाँ पर आकर कह दें कि ये मेरा visible environment है. ओके, दैट मीन्स कि ये इसकी जो विजिबिलिटी है वो नज़र आएगी, बाकी चीज़ें अफेक्ट नहीं करेंगी. ठीक है, सो एज यू कैन सी कि जो पीछे का ब्लैक था, वो जो बैकग्राउंड था वो ब्लैक हो गया और कोई भी चीज़ उसकी लाइट सिर्फ उसकी जो लाइट है या डार्कनेस है वो ऑब्जेक्ट पर इफेक्ट नहीं करी. तो इसका मतलब ये कि ये सिर्फ एज अ बैकग्राउंड एक्ट कर रहा है. बट वी ऑल्सो वांट टू चेंज द बैकग्राउंड कलर. So how can we do that? We can just go into this texture section and add color. और फिर आप अपनी मर्जी का कलर पिक कर सकते हैं. ठीक है, let's go with a grayish one. Right? You know what? Let's just go a bit dark.
ठीक है। सो यहाँ पर अपने एक मेटल का टेक्सचर क्रिएट किया था, तो मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। इफ़ यू कैन गो इन द ऑब्जेक्ट मैनेजर, इन द मटेरियल मैनेजर, यहाँ पर आए, एडिट करें, कॉपी, फिर इधर आ जाएं वापस, विंडो, मटेरियल मैनेजर ऑलरेडी ओपन है, एडिट और पेस्ट। यहाँ पर यू कैन जस्ट कॉपी एंड पेस्ट इट। ठीक है। सो यू कैन सी कि इसके ऊपर वो आ गया है, क्या कहते हैं, टेक्सचर आ गया। Okay, so let's do one more thing. Now I will just talk about lighting. So let me just off it. ठीक है। अगर मैं व्यू पोर्ट विजिबिलिटी ऑफ करूँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि व्यू पोर्ट की विजिबिलिटी इसकी वैसे भी है, सच कुछ खास नहीं है। बट मुझे इसकी रेंडर विजिबिलिटी ऑफ करनी है, ताकि ये लाइट जो ऑब्जेक्ट पर पड़ रही है ये नहीं पड़े। तो आई एम जस्ट गोइंग टू मेक इट ऑफ। ठीक है। तो अगेन हम उसी स्टेज में, बस हमारे पास अब ब्लैक बैकग्राउंड आ गया, जो कि हम चेंज कर सकते हैं, बट स्टिल वी आर स्टिल इन द सेम फेज एज वी वर इन द फर्स्ट प्लेस। ओके, सो लेट्स क्रिएट सम लाइट्स। एक और मैं यहाँ पर न्यू पैनल क्रिएट कर लेता हूँ। इससे होगा ये कि नाउ आई डोंट हैव टू चेंज द कैमरा हियर। मैं इसको नीचे यहाँ पर लाता हूँ, तो अब मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ, और यहाँ पर मेरा कैमरा इससे लॉक है क्योंकि, तो वो चेंज नहीं होगा। ठीक है। और यहाँ पर यू कैन सी डिफ़ॉल्ट कैमरा इज़ द वन विच यू यूज टू नेविगेट। और ये जो कैमराज आप क्रिएट करते हैं, ये या these are for renders. Okay, you can just even say that it's a render cam. Usually ये render cams होते हैं जो कि आप additionally create करते हैं. So you can distinguish between them. You can even change कह रहा है यहाँ से डिफ़ॉल्ट में चले जाएं और यहाँ से रेंडर कैम में चले जाएं। ठीक है। सब ये कैसे अपडेट होगा? सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो डिसाइड कर लें कि आपको किस में रहना है। तो मुझे इसी में रहना है, रेंडर कैम ये, तो यू कैन डू दैट एज वेल। बट इफ़ यू वांट कि यहाँ पर जो भी चल रहा है वो यहाँ पर अपडेट हो, तो लेट्स से कि डिफ़ॉल्ट कैमरा है वो यहाँ पर शो हो, तो लेट्स ट्राई दैट। ऑप्शंस, कैमरा, okay, it usually hangs out, but I think for now let's just keep it that way. I will tell you guys in the coming tutorials. We'll lock it. Okay, so once you lock this thing, यहाँ पर इसका size बढ़ जाएगा because it is following the size which is set up here. ठीक है। So ये जो first वाला है ये scale करता है ओवरऑल आउटपुट को। ठीक है। और ये क्या करता है, ये आउटपुट की क्वालिटी कम करता है, सेकंड वाला। सो डोंट यूज़ दिस। ठीक है। यूज़ दिस वन, अदरवाइज आपका रेजोल्यूशन ख़राब हो जाएगा। ठीक है। सो एक्चुअली ये जो सपोर्ट कर रहा होता है, ये एक्टिव व्यू बोर्ड को सपोर्ट कर रहा होता है, वन एट अ टाइम। सो इफ़ आई जस्ट रिमूव दिस, सो यू विल सी कि ये वाला मेरा एक्टिव व्यू बोर्ड था, तो ये इसी को डिफ़ॉल्ट में यूज़ करेगा। ओके। सो okay, so one more thing which you can do is click on this render camera, or go into the Octane tab and click on the camera, Octane camera tag. I will tell you guys later कि ये किस लिए काम आता है, but for now let's just use it. Okay, so once we have this cube, now we need to light and share it. So you can go into the light section and bring this out. यहाँ पर you can create area light. I'm not going to go through all of them. I will be just using the ones which will be required in the tutorial. So Octane area light पे मैं click करूँगा, and once I go like this, you can see that it has lit up the whole thing. Okay, so इसके लिए मैं एक और पैनल खोल लेता हूँ और यहाँ पर ले आता हूँ, so that I can navigate properly. Okay, so as you can see,
we can even duplicate these lights और इसकी direction change कर सकते हैं. But right now we are not seeing a good result. We are not seeing that much of a good output on the render screen. So let's try one more thing. Let's try to create another material and let's just put it here. ठीक है, और इसका मैं diffuse बंद कर देता हूँ. ठीक है. So now if I come closer, so अब क्योंकि ये ग्लॉसी सरफेस है और इसकी रिफ्लेक्शन फुल ऑन है और यहाँ पर कोई रफनेस नहीं है, so you can see the reflection coming here. So let me just open it up and add some roughness to it. So the more roughness you will add, the more blend in light effect you will get. Okay, so this is how you create lights. Okay, I know this doesn't really look appealing right now, but once we start the style framing process, it will get interesting. But for now, just play around with these things. We can also try one more thing. If I just close this, if I just remove this background, okay, and if I do this, okay, so once क्योंकि हम अभी इस स्टेज में ये एक लर्निंग का प्रोसेस है, so let me just give you guys an understanding of what is direct lighting and what is path tracing. So let me just create a basic plane. ठीक है, और ये लाइट में थोड़ा सा दूर ले जाता. सही. Okay, so यहाँ पर जैसे you go into the setting section, यहाँ पर direct lighting आ रही है और second option है path tracing का. और भी है, but we will be just discussing these two for now. So what is direct lighting or what is path tracing? Let me just give you guys an example on the internet so that you can see it more clearly. So basically, once you जो अभी हम कर रहे हैं वो है direct lighting. Okay, so मैं इसके ऊपर से हटा देता हूँ हाथ. Okay, so in this direct lighting, you can see कि जब लाइट की रेज अभी लाइट इस डायरेक्ट लाइटिंग में ऊपर लेफ्ट मेरे राइट से आ रही है. ओके, हियर यू कैन सी ये राइट से आ रही है. ओके, सो वंस द लाइट हिट्स द ऑब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ पर कोई स्कैटरिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, एंड इट जस्ट इट लुक्स फ्लैट. हाउएवर इन पाथ ट्रेसिंग, इन डायरेक्ट लाइटिंग, what it does is that ये जैसे ही इस पे रिफ्लेक्ट होती है लाइट, वो फिर बाउंस होती है लाइट इधर से उधर. सो इसकी काफ़ी जितनी भी रेज होती हैं वो सारे पार्टिकल्स वो रिफ्लेक्ट होते हैं हर सरफेस पे जहाँ पर वो हो सकते हैं. ठीक है, लेट मी गिव यू गाइस अनदर एग्जांपल. ये समझे लाइट सोर्स है, एंड वंस ये समझे ये लाइट सोर्स है. ओके, वंस इट हिट्स इट, ठीक है, ये जैसे ही इसको हिट करती है आपके व्यूअर की आंख में जाती है और फिर रिफ्लेक्ट करती है एक एंगल में जहाँ पर भी वो कर सकती है. ठीक है, बट इफ़ यू लुक एट दिस वन, ये क्या करता है, ये जैसे ही किसी भी सरफेस को हिट करता है वहाँ से बाउंस बैक होती है लाइट. सो वंस द लाइट स्टार्ट्स टू बाउंस बैक, इट इल्यूमिनेट्स मोर. वो और ज़्यादा उस एरिया की सरफेस को उभारती है और उसकी सरफेस को बताती है कि यहाँ पर बैंड है, यहाँ पर एज है, यहाँ पर यहाँ पर कुछ मोल्ड है, वगैरह वगैरह. ठीक है, सो इट डायरेक्ट इल्यूमिनेशन इज जस्ट कि रेज आपकी ऑब्जेक्ट पर पड़ रही हैं बट बाउंस नहीं हो रही ओवरऑल एनवायरनमेंट में. बट इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन मीन्स पाथ ट्रेसिंग, मीन्स कि आपकी लाइट बाउंस होती है वंस इट हिट्स द सरफेस. ओके, सो लेट्स
let's try path tracing now. Okay, so right now you won't be able to see that much of a big difference, but if you look at it here, you can see कि यहाँ पर जो darkness है वो ज़्यादा है. ठीक है, if let me just increase the intensity of it. अब try करके देख. So this is not really a good एक और काम करने के. Okay, और हम इन surface को भी texture दे देते हैं and let's just make it a bit more realistic if possible. Okay, so let's try and switch and see कि भाई क्या रिजल्ट है. अच्छा, यहाँ पर if you want to see double results, मतलब पुराना वाला और आप कंपेयर करके देखना चाहते हैं अपने पहले रेंडर को और फिर बाद के रेंडर को, so यहाँ से you can compare it. You can just click on this, enable A/B comparison, ठीक है, and store render buffer. तो इसने स्टोर कर लिया है. ठीक है, अभी कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि ये एक ही फ्रेम को दिखा रहा है. So once I change this direct lighting to path tracing, now if you see, oops. So now if you see, you can see the difference. ठीक है, direct lighting ने bounce नहीं की तो हर जगह you can see some dark shadows over there and there. But जैसे path tracing पर आता हूँ, you can see the difference. Okay, क्योंकि light bounce हो रही है. Okay, so this is the difference. So now we know how to create lights and now we know how to create materials and things like that. You can also explore this stuff. For example, let me just create. अच्छा, जब आप path tracing पर आते हैं, you can see a lot of numbers here. इनको control करना होगा, otherwise ये render चलता ही रहेगा. तो you can just use 256 samples here or GI clamp. You can just pick 10. That would be enough. ठीक है, इसको भी आप कम कर सकते हैं इस वजह से. ठीक है, so once so normally if you want, अगर आपके पास noise आ रही है specular में, मतलब glass effect में, तो you just need to increase this or don't go too far. ठीक है, so just increase gradually these numbers because it will at the end of the day it will heavy your artwork or it will heavy your render time. ठीक है, इसी तरह डिफ्यूज अगर नॉइज आ रही है तो यू कैन जस्ट इंक्रीज सम नंबर्स हियर, बट इफ यू वांट टू गो के दोनों साथ बढ़ाने हैं तो यहाँ से यू कैन इंक्रीज द सैंपल सो इट विल अफेक्ट दिस होल थिंग. Say so, let me just close it once you and I usually use path tracing. Okay, so let me just delete this. ठीक है, compare को मैं बंद कर देता हूँ. So now we have nothing. Okay, this is what we had when we started. Okay, so let's try one more thing. So पहले तो मैं इस क्यूब को कुछ फिलेट वगैरह दे देता हूँ so that इसमें कोई थोड़ी बहुत जान आए. ठीक है, और इसको भी मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ. ओके, इसको मैं फ़िलहाल बंद कर देता हूँ और यहाँ से यू कैन सी मैंने टेक्सचर बढ़ाया है तो वो बहुत ज़्यादा फैल गया. तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पर आऊँ, एक बार क्लिक करूँ इस पर और इसके टाइल्स को मैं ट्वाइस कर दूँ. ठीक है, मे बी 4 times. ठीक है, now this looks better. So as you can see right now there's no light in the environment, so let's create one. We can also create Octane daylight or Octane planetary. तो ये दोनों almost same है, but you will see the difference once we create them. You can also play around with these things. Again, I'm not going to go into the details of these things, but I will just give you the surface knowledge so that you can get started. Okay, so Octane daylight, let's try that. So once I have created this, you can see that it has just created a daylight. Let me, if I just, if I just change it to like this, you will see what is happening.
So it's basically creating a daylight environment. And ये बिल्कुल SGRI की तरह काम करता है. It just creates a whole sky. Okay, so अभी ये surface की बहुत अभी ये देखें float कर रहा है. इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ. तो थोड़ा सा बस है. ठीक है. So let's click on this icon. And now you can see कि sky इसको change करते रहेंगे. You will see the difference. ठीक है. Power, brightness, sun की intensity. ठीक है. North offset. Here you can see कि कहाँ से shadow आना चाहिए, कहाँ से नहीं आना चाहिए. ठीक है. Sun size. And now what you can also do is you can just click on this Octane daylight और rotation की use करेंगे यहाँ से. R भी press कर सकते हैं. और once you start rotating you will see. अच्छा, make sure कि आप किसी एक certain angle से जा रहे हो, otherwise मुश्किल होगा समझना. ठीक है. So you can see the difference. ठीक है. Not all the rotations work the same way, so you will just have to explore these things yourself. However, I can tell you a few things. For example, like if you go to here, यहाँ पर ये दो कलर्स इस्तेमाल हो रहे हैं sky बनाने के लिए, blue और red. So if I click on this and if I go go and create a sky जो कि realistic नहीं हो, but still I can get that result. So you can also create some sci-fi lightings from this setup. Or इसी तरह if I go here, or I can just go create a white environment. You will see that these kind of effects once you start tweaking stuff, once you start seeing how to how to get the results which you want, you will start to get good results. I don't know if I just said whatever I said makes sense. Anyway, you get the point, right? Okay, so इसका मैं थोड़ा सा so इसको मैं यहाँ पर ठीक है. So there's also a few more things. For example, we don't want this. I can just switch it off. ठीक है. Or let's just use this background. ठीक है. हमने अपना background on कर लिया. You can see that here. ठीक है. So let's also remove this. So now we just have this. Let's create some illuminated objects. For example, let me just create a sphere. And if I put it somewhere here, this use it here. ठीक है. यहाँ पर if I let me just delete these things as well. ये light भी delete कर देते हैं. So now we need I want this object to act as a light object for me. So let's try that. एक create कर लेते हैं material, create diffuse material, and just drag and drop it here. And once you do that, just double click on it and click on emission, on texture emission. Texture emission में आकर you can just go to RGB spectrum. Okay, and right now you don't see any effect because we haven't अच्छा हमने apply कर लिया. So okay. Let me just click and surface brightness. Even strength double-sided. Okay. Okay, so once you start moving this, you will see कि इसकी reflection भी उसके साथ साथ move करेंगे. So this method we will use a lot in our style framing process. Okay, so सबसे best result इसका उस वक्त आता है जब हम use कर रहे होते हैं glass object, because glass is all reflected. Glass is all based on reflection. Okay, so let's create one. Create specular, and specular को मैं apply करूँगा cube पर.
Okay, so जैसे ही मैंने ये create किया, you can see that there are some reflections going on, but it doesn't look nice enough. So let's just bring back the HDRI. ठीक है. अब हम क्या करें, मैंने इसको बंद कर देता background को. So now you can see there's everywhere is just darkness. हर जगह सिर्फ darkness है, and there's just one source of light जो कि हमने sphere की सूरत में create की है. So now you will see the good effect of it. But again, because इसमें कोई roughness नहीं है, so it will be just core reflections only. So let's just increase a bit of roughness so that you can see some good effect of it. You can also do one more thing, थोड़ा और cool लगेगा ये इसको बंद करके. You can also put it inside of the cube. Let's see what happens. See, so the source of object we were using is illuminating the whole thing. However, right now it is too much at the moment. So what we can do, we can just go into the emission tab, click on this, and इसकी power कम कर दें. और फिर gradually फिर हम आगे start करें और देखें कि भाई कितनी रखनी चाहिए. So if it is 1, it looks like this. If it is 2, it looks like this. If it is 5, it looks like this. ठीक है? So we can also go here or here. ठीक है, इस तरह की भी animations create हो सकती हैं. This will look nice. This is a nice effect. इसी तरह let me just bring back that पहले तो मैं इसको थोड़ा सा स्केल कर लूँ ताकि मुझे अच्छी एक बड़ी लाइट मिल जाए. ठीक है, और इसको मैं रख लेता हूँ कहीं नीचे से या इधर. ठीक है, जहाँ से मुझे बेहतर लाइटिंग वगैरह मिल सके. Okay, so let's just keep it here and let's try to create an add metal surface here as well. So that here you can see we are getting some interesting results now. Now things are looking to get more more मज़ेदार. So here यहाँ पर you can see कि metal surface है, सब कुछ darkness है. It looks really cool. इस तरह से हम अपने फ़ोन की भी कुछ revealings कर देंगे. Okay. So ये सिर्फ यहाँ पर end नहीं होता. You can also let me just get back to this glossy material. You can see कि ये अलग surface पर अलग view दे रहा है. यहाँ पर एक अलग view दे रहा है. ठीक है. So we can also do one thing. अगर मैं sphere को ही duplicate करता हूँ और फिर मैं इधर ले आता हूँ. ठीक है. So you can see कि यहाँ पर 2 surfaces आ गई हैं. ठीक है. बट देयर विल कम अ टाइम जिसमें आप कहेंगे कि भाई मुझे सही है ये इसको मैंने यूज़ कर लिया है और ये मेरे रेंडर के लिए भी मतलब मेरे स्टाइल फ्रेम के लिए डिज़ाइन पर भी सही लग रहा है. ओप्स. बट यू विल नीड टू इरेज दैम. यू विल नीड के यार ये ख़त्म करें अब, मतलब ये स्क्रीन पर नहीं आ रहे हो. राइट. सो हाउ डू यू डू दैट? यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस or go to the C4D Octane tags. In the object tag, you will see that there is a visibility section. अच्छा, ग्रीन बटन पे क्लिक करेंगे एक बार तो आपके पास ये पैनल आ जाएगा. विजिबिलिटी में कैमरा विजिबिलिटी ऑफ करने पर वो कैमरे में विजिबल नहीं होगा, बट उसकी जो रिफ्लेक्शंस हैं, उसकी जो बाकी तमाम चीज़ें हैं वो सब विजिबल होंगी. इसी को कंट्रोल क्लिक करके इफ़ यू ड्रैग ऑन दिस अदर ऑब्जेक्ट इट विल हैव द सेम इफेक्ट. ठीक है. Oh, and you can also do one more thing. You can also choose the source, the light source. For example, if the emission is white, you can also change it to red or something. ठीक है. और हो सकता है कि आप इसी को कंट्रोल क्लिक करके डुप्लीकेट करें और एक इसका ब्लू बना लें. और you can just drag and drop it to other one. So you can see there are 2 objects now. Now we can see some light effects, but अभी भी ऑब्जेक्ट बहुत क्लियरली नज़र नहीं आ पा रहा है. सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन आल्सो क्रिएट एन एरिया लाइट. ठीक है. और लेट्स ट्राई टू क्रिएट एन एरिया लाइट और उसको ऐसी जगह पर रखें जहाँ से वो सरफेस को थोड़ा सा उभार सके. So again, it doesn't really look that great right now. So
ठीक है, तो और ये भी कर सकते हैं कि हम टेक्सचर में आए लाइट के और इसका कलर चेंज कर दें, इसको कोई रेडिश वगैरह कलर दे दें या पर्पल दे दें, ठीक है। वी कैन ऑल्सो डू दिस वन मोर थिंग कि इसका पहले मैं टैग हटाऊँ और सी कि भाई ये कहाँ पर है, और इसको मैं अंदर रख दूँ. So you see that things are starting to get interesting. Okay? So that's how you can create some interesting lighting effects or HDRI or background. But you can change the background. Let me just open this up now. Or now you can just change it to any background you want. इसको थोड़ा सा dark रखना है, कुछ भी रखना है, because this is not going to affect your object's lighting. It is just going to be there. You can also make it a gradient as well. For example, if I just go here और यहाँ पर टेक्सचर में मैंने कलर की जगह ग्रेडियंट यूज़ करना, तो वहाँ पर ग्रेडियंट आ जाएगा सही. सो यू नीड टू प्ले अराउंड विद दीज वैल्यूज़ एंड सी कि भाई कौन सी वैल्यू काम सही कर रही है आपके केस में, ठीक है. So you will start to see these kind of things. ठीक है. So for example, if it is just a black thing, we can go here and make this, और फिर इसको और डार्क कर देते हैं, ठीक है. So you will start to get a hang of it once you start experimenting and stuff. So let me just ठीक है. You can also play with this material also. For example, अगर मैं reference को थोड़ा सा और बढ़ा दूंगा, you will see कि भाई ये और फैला हुआ लगेगा, ठीक है. So it all depends on what you want to do and what you want to achieve with the lighting effect, ठीक है. Let's just close the reference thing. You can see कि अब ये थोड़ा सा और dramatic लग रहा है, ठीक है. Let's get back to this cube और इसको फिर से metal बना देते हैं. You will see that different lighting have different effects on different materials. Okay, that's a lot of different. But you will see once you start playing around with these things. Okay, so just play with these things. Don't think about यार ये मुश्किल है या ये किस तरह होगा. You just settings को शेड है और देखें कौन सी वैल्यू, थोड़ा सा वैल्यू को भी ज़्यादा बढ़ाएं. जस्ट यहाँ पर थोड़ा सा ख्याल रखें, ये जो पार्ट है यहाँ पर इसको थोड़ा सा नॉर्मली रखें फॉर नाउ, फॉर द टाइम being. Because once you start working increasing these values, तो यहाँ पर ये render time बढ़ जाएगा, ठीक है. So let's just create a better frame from this. ठीक है. So I think this is good enough for this video. So in next video we will tackle how to create the style frame of the animation we have already created. Okay. So thank you for watching this and see you guys in the next video.